Engro Holdings analyst briefing for third quarter. एको है बहुत शमी तुम्हारी आवाज में. Yes, I think it's fine now. Assalamualaikum everyone. Welcome to the third quarter 2025 analyst briefing of Engro Holdings. My name is Shamir and I'm the Manager Portfolio Performance Management and Investor Relations for Engro Holdings. We'll be taking you all through the macro highlights during the 9 months period, and then our group CFO, Mr. Farooq Barkat Ali, will be taking you through the performance updates for the group. Farooq, over to you. Okay, so first sound check कर लेते हैं. Shamir, just confirm if you can hear me. Yes, Farooq, you are audible. Okay, good. So Assalamu alaikum everyone. Thank you for taking out time for this analyst briefing for quarter 3 2025. We announced our results yesterday, I guess. Today in the morning. The meeting was yesterday. And I believe it's a good time for me to take you through some of the key salient features of how the corporation has done in the 9 months, and we'll take the questions. So I won't spend too much time on the slides. Obviously, ये तो मिल भी जाएंगी आपको. But I'll pass on the key messages. So without further ado, I'll start the presentation. This is the agenda for the presentation. Almost a regular one, which we always cover. Starting with the group legal entities, no major change in the entities except for the fact that I think last time हमने बात कर ली थी कि there's a company called Deodar Private Limited which has now been added to our portfolio, which is part of Engro Connect, which is a parent company held 100% by Engro Corporation. So that's the only major change. In fact, that was also there last quarter. So no real change this quarter in the organizational setup of Engro as a group. From a macro side, again, you are students of macroeconomics already, so no need to go into a lot of details, but there are some company like Engro, for instance, the monetary policy stood at around 11%. We still hope that there's some room to reduce it as soon as the state bank feels all right in terms of inflation control. I'm sure they will take it down to single digits, inshallah. And then we as a country and a company will benefit from this. Some satisfactory news on the IMF front. Inflation has edged up to 5.6, but still I would say it's not too bad as compared to the interest rate. The real interest rate is still 11 minus 6 is about 5%, and that's pretty high. So I have reasons to believe that it will come down. Geopolitical volatility is a concern for everyone, include as a Pakistani. I believe that this is a worrying sign. Your neighbors, the relationship with your neighboring countries has not been very consistent in the last few months, and of course, whatever the reasons are, whoever fault it is, war or warlike symptoms are never healthy for any company or country. So that's something which we're keeping an eye on, and we hope that things will improve going forward. The floods impact, which we believed, I think जितना हम सोच रहे थे अल्लाह का शुक्र है उससे बेहतर ही रहा. कोई ऐसा significant impact हमें नहीं नजर आया है floods की वजह से. सिंध में तो बहुत ही कम impact है. And in Punjab, maybe we have seen 10 to 12% impact on certain crops, which is, alhamdulillah, not very significant. I would say इससे काफी initial views इससे काफी ज़्यादा adverse थी. So that's something. These are the few key points on the macro side in quarter 3. So again, just recapping what we said last time also, the 3 things which our financial statements will continue to reflect till the end of the year, and you as a user of the financial statements should be aware of.
Obviously, we will not go into that much of detail. Last time हमने बहुत detail में explain कर दिए थे इन तीनों बातों को, but I'll just touch upon them so that in case there are new users or new readers, they should have a feel of that. Three major things that are taking place in 2025. One is a group restructuring, where Engro Holding came into being and Engro Corporation became delisted. All the shareholders of Engro Corp, other than the sponsors, became part of Engro Holdings family, and therefore the number of shares increased from 481 million to 1.2 billion. So that is always reflected in the earnings per share and the owner's share profit. So we'll explain you the numbers when we come to those slides. So let's have that, because when we compare, that was Daud Hercules and this time it's Engro Holdings. So वो फर्क जो है ना उसकी वजह से काफी impact P&L के ऊपर नजर आता है, especially the EPS portion and the owner share component में. So it's always good to have a note of that. Termination of SPAs with thermal assets. Last time we spoke in detail that Liberty के साथ हमारी deal नहीं हुई, जिसके नतीजे में on a commercial side, yes, we believe we now have the right to book the profits. और कुछ specific accounting होती है IPPs की, वो भी हमने last time discuss की थी, इसकी वजह से एक significant profit after tax में एक number नजर आता है 42 billion का roughly, and which essentially will convert into normal profits every quarter. So इस बार भी आपने देखा है कि Engro Energy के profits को regular तौर पे book कर लेंगे हम as a going concern or continued business rather than a discontinued business. So that is another reminder of the same thing. ये भी पहले बता चुके हैं, पहले explain कर चुके हैं. So no need to go into details unless there's a question on that. हम देख लेंगे question answer session में. और देवदार की addition जो है, that is started to now this is 4 months have passed. So June में हमने इसको take over किया था इस asset को under the scheme of arrangement, and we got the management control from June 3rd. और तकरीबन 4 महीने की performance we have seen in these financial statements. Alhamdulillah, it's a good start. We'll talk a little bit more about that as we go in. But इससे related कुछ accounting entries वगैरह भी हैं और provisional जो fair value adjustments होती हैं, वो भी I think समझना जरूरी है ताकि user of the financial statements confused ना हो in terms of depreciation वगैरह जो entries आ रही है इसके साथ में. So again, these are इत्तेफाक की बात है कि all the things are coming into one year, जिसकी वजह financial statements की जो interpretation है उस पे हमने काफी कम्युनिकेशन तो की है, बट इट्स नेवर इनफ जिसको कहते हैं ना. सो वी कीप रिपीटिंग, reiterating, and therefore when I open the floor तब भी क्वेश्चन लेंगे, और इन जनरल भी अगर आप हमसे राब्ता करना चाहें सेपरेटली टू अंडरस्टैंड दीज इम्पैक्ट्स once more, तो we will welcome that for the benefit of the users and the analyst of the financial statements. इन तीन चीजों को हाईलाइट करने के बाद again let's have a look at the earnings per share and the profit number. The profit number that you see, the owner's share really that you see is a 42 billion number, which is in the left hand side column. Earnings of 34 rupees in the 9 months. Take away the one-time adjustments of thermal assets and the related adjustments, we come down to 15 billion with the earnings per share of 12.59. Again, these are 12.59 is using the 1.2 billion shares, which includes the new shares that have been issued. So we are trying to show you this slide just to normalize things so that you can compare apple to apple. In terms of last year, कौन सा number देखना चाहिए, इस साल कौन सा number देखना चाहिए. So I think the real comparison is the total owners share, 100% owner share जो 15 billion को अगर हम लास्ट टाइम से कंपेयर करें व्हेन वी वर दाऊद हरक्यूलिस के फॉर्म में थी एंग्रो होल्डिंग्स, तो 13.5 बिलियन का नंबर जो हमने परफोरेटेड बॉक्स के साथ मेजर किया है, दीज आर द टू नंबर्स व्हिच शुड बी कंपेरेबल विद ईच अदर, बिकॉज बाकी ऑब्वियसली इसके अंदर अकाउंटिंग एंड मैथमेटिकल मेजरमेंट्स आ जाती हैं. So that's something which we believe that the users of financial statements should be looking at, and to avoid any confusion between the last year and the current year. ये हम पहले भी 2 quarters में बता चुके हैं. We are just repeating this thing again for the benefit of the users. Moving on, coming to the results. Again, results को भी हमने 2 हिस्सों में split किया है. If you look at the consolidated results, obviously top line remains same in both the section. You can see the top portion, there's a set of numbers. There's a bottom portion which has a set of numbers. Both are consolidated, but one is excluding the adjustments.
one is including the adjustments. So without repeating too much, the bottom part is the one which excludes the thermal assets की जो earnings वगैरह हैं, जो one time impact है. The 407 का revenue है, consolidated profitability at 32 billion, profitability of owners is 15.2, and the earnings per share is 12.59. That's a real representation, excluding the thermal assets. No doubt, including the thermal assets, the number will remain in the top row, जो हमने यहाँ पे देखा है. So that's something which is pretty relevant in these circumstances. But from a reasoning point of view, we still believe that there is some explanation on the results side, which we'll cover in the business results when we see them. But on an overall basis, urea volumes have been lower than last year. Discounts हमें देने पड़े हैं because the market has been long. Not only us, but other players have also given discounts on urea to maintain market share. And the profitability of Engro polymers, which is driven by the international core delta, as we call it. The international margins on PVC has been very, very low, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है it is an internationally driven margin, so वो impact Engro polymers पे है, which is in losses right now. Engro LNG और हमारे टेल्को बिजनेस पे टैक्सेशन का इम्पैक्ट रहा है, and that has क्योंकि हम मिनिमम टैक्स रिजीम में हैं, these are service businesses, and they have taken the effective tax rate up quite a bit, particularly LNG के केस में तो बहुत ज़्यादा है. कनेक्टिविटी में still we are close to 58-60%, but that's also very, very high. We are taking it up with the relevant ministries and FBR and Ministry of Finance to make them realize that these levels, this minimum tax regime needs to be reconsidered for such businesses which are high margin, low margin and high top line, high capital intensive businesses. So we hope that our request of reconsideration of minimum tax will be heard in the forthcoming budget by the relevant stakeholders. So that's we'll talk a little more about the businesses, but let me just cover the standalone portion, which is very, very small indeed. The dividend income is very small. As you know, we are not giving any dividend from Engro Corporation to Engro Holdings. So because Engro Corporation is itself purchasing the mega asset of the Odar in installments payments. So till the time that is not done, we don't expect any dividends to be paid to Engro Holdings. Any material dividends, small dividends, ठीक है, to cover the cost, we'll continue to pay. But कोई significant dividends हम Engro Holdings की तरफ आते नहीं देख रहे हैं, and that will be the trend till December 2026, as we have explained very well in the previous quarters as well, and also explained in our director's report as well. So I think वो वहाँ पे भी market को काफी clarity है in terms of dividend के जो एक pause लिया है हमने 1.5 साल 2 साल का. Standalone side पे there's nothing much to add. Again reminder that last time standalone के अंदर दाऊद हकलिस की अपनी income भी थी जब वो जो अब DH partners के अंदर carve out हो चुकी है. So just when you are comparing these numbers of profitability of standalone, keep that part in mind that that portfolio has been moved to Dawood Hercules Partners Limited under the scheme of arrangement. So that's on the high level results. Performance wise, I think some good things, some not so good things. I think urea volumes overall less हैं, and discounts भी हमें देने पड़े हैं, but the good part is that in Q3 October में September में हमने observe किया है कि हुकूमत ने farmers के लिए काफी incentives announce किए हैं, support price भी announce की है, इसके अलावा logistic support भी provincial level पे दी है. So which makes us believe that the ending part of the year, which is the Rabi season, which is a very important season for fertilizer sales, will pick up inshallah. And farmer economics थोड़ी बेहतर नजर आ रही है, पानी के avails भी बेहतर हैं, और साथ में जो overall pricing जो farmer को obtain हो रही है वो भी बेहतर है crops की. So that is a good sign for the urea offtake. And inshallah Q4 में हम देखेंगे जो inventories पे जो pressure है वो कुछ हद तक December तक आते आते fertilizer में कम हो जाएगा, inventory के pressure कम होगा, which means sales will pick up in Q4.
और Engro polymers again, the silver lining ये है कि domestic volumes काफी healthy रहे हैं. We have had a very good Q3 in terms of volumes, but margins are very bad, almost at a decade low positions. Hence, the company is still not making too much, still not making any profits as we speak, बल्कि वो losses में है. Q3 में आपने देखा polymer के losses थोड़े shrink हुए हैं. उसका reason ये है कि volumes काफी बेहतर थे at a low margin. But at least business was able to sell a very reasonable, a very decent quantity in Q3. Telecom business, mashallah, 15,000 tower के साथ, it's a pillar of Engro now. Or with 4 months of operations in Deodar, that business has started to generate cash. Naturally, उसकी acquisition cost और उसकी कुछ accounting related depreciation की वजह से उसका impact इस तरह सामने वाज़ी तौर पे नहीं नजर आता. But I think that the delta between the cash generation and the profit of that business is something जिसको हमें भी अपने users को समझाना पड़ेगा आने वाले दिनों में भी. And as the business goes along, I think इसकी understanding भी बहुत बेहतर होती जाएगी from the market side also, because these are unlisted companies, so इसके results इस तरीके से publish नहीं होते इस detail में. But I think telecom जितना important ये vertical है, I guess the onus lies on us कि हम जितना explain आपको ये बेहतर कर सकें in terms of the accounting results versus the real cash generation of the business. So first 4 months have been much better than the initial feasibility, which makes us believe that this is a business for future for us. Inshallah. LNG terminal again contributing very well, continues to do that. And in terms of thermal assets also, we have produced uninterrupted on both the IPPs that we are operating along with the mine. So that's on the highlight part. I won't go into too much details on the award side in the interest of time. Company के results पे बात कर लेते हैं. Engro fertilizers, you can see all the red arrows there in terms of profitability, in terms of revenue and urea volume. But as I said, this has been a longish market this year. The farm economics काफी under pressure रही थी. लेकिन the good thing is that now with government intervention, we can see some revival in the urea offtake. So that is a good sign for us. Both water availability भी बेहतर है और जैसे मैंने बताया farmers को अच्छी price भी मिल रही है. So I think we have every reason to believe that Engro fertilizer will start bouncing back in terms of profitability. I know last quarter is always very important for fertilizer companies because the Rabi season is a wheat season and wheat is the backbone of the entire crops that we have. So let's hope that the farmer gets a fair share and so does the company also. Still, the company has made a decent amount of profitability of 14 billion. Of course, this is lower than last year, but still very healthy in terms of cash generation. Engro polymers, as I said, better in terms of revenue because the sales are pretty solid, but very weak in terms of the margins, and hence that is dragging the profitability down. So I think you can see the domestic volumes picking up 174 versus 146, which is a very good sign. But I think generally speaking, the business hasn't generated any cash. In fact, burned some cash because of the international margin. It's a commodity business. We all know that. As I explained last time, we have been in this business for more than 2 decades. In fact, close to 3 decades. So we know, okay, these cycles come and go. We just have to stand our ground with as much cash conservation as possible in businesses like Engro polymers. LNG business, you can see that the almost 3% is not a big deal. So chemical handling is almost there. LPG is doing pretty well. The business has suffered because of the taxation, because the tax, it is a minimum tax regime, and the rate of tax was increased from 9% to 15% of top line, which almost eats up 75% of the profitability of this business, which is not a very healthy sign, not a sustainable sign. We are taking this up very well with the Islamabad ministries and FBR, and we have got very good response from them that they will genuinely make an effort to correct this anomaly for businesses like Engro LNG and the connectivity business, which is 6% of top line,
as compared to 4% what it was. So both the businesses shown on this page are under minimum tax regime, which we believe is very unfair because they are very high capital intensive and low margin business. They are not professional services. They are industrial services, so to speak, and they are just like in industry. So our plea is to categorize these businesses into normal tax regime, and we hope that our request will be heard very diligently by the authorities. But we'll continue to push that till it happens. Of course, till that time, as I said, businesses are doing their bit. From the performance angle, there is no challenge, there is no issue, both in LNG as well as in connectivity. It's just a taxation which is a pain right now after July 2025. Engro Energy, again, this is doing pretty well in terms of, Kadirpur, of course, has seen a dip because of the recent, I would not say recent, because of the arrangement that we signed. It's a renegotiated contract on take and pay rather than take or pay. And it operates at around 50% of its capacity. So yes, profitability has taken a dip. But we are hopeful that if we find more fuel in the nearby locality, which we have already, to some extent, this is going to improve because now it's take and pay. Every molecule of dispatch, every megawatt of dispatch will help the bottom line of the company, and therefore our efforts to find more fuel for this plant has increased and have also borne some fruits as well. Engro Power Gen Third Limited also continues to perform very well. It has generated very healthy cash also this year. The recoveries are very good. Mashallah, 100% plus recoveries हैं कम से कम इस period के लिए भी और last period के लिए भी, which enabled the business to give very healthy dividends to Engro Energy Limited, which has given it to Engro Corporation. So that has been a good cash flow generating cycle as far as Engro Energy is concerned. And on hindsight we can say जो डील का लैप्स हो जाना था, जो सेल का लैप्स हो जाना था, वो हमारे लिए कमर्शियली और फ्रॉम अ कैश फ्लो एंगल बहुत अच्छा प्रूव हो रहा है, thankfully. So Engro Exim FZD again doing their job in terms of captive and non-captive, picking up on the third party volumes from the operating from Dubai and making it self count in the whole portfolio. Friesland Campina, almost the same, -3 as far as revenue is concerned. Profitability is better because price increase have been taken. Again, the business still has the same challenge of conversion from loose milk to packaged milk. I'm not sure if we have attended there, had a discussion with their management, but at least they're making all efforts to make sure that this conversion does not reverse, or at least is grows at a small pace. From loose milk to packaged milk. This business has a lot of potential, but because of sales tax and other regimes, the growth is really hampered. Its market share is very healthy within the packaged milk category. It's as good as 60%, but unfortunately, this overall profitability of the packaged milk sector is under a lot of threat because of the sales tax disparity versus the loose milk. All in all, again, I won't go into these details of these recognition. Mashallah, Engro continues to do well on these areas, and the sustainability initiative that we continue to take as a very responsible company. These all are very important and relevant, but I won't, in the interest of time, I won't go into details of each one of them. So that's all from the presentation side. What I will do is I will open the floor for questions. Shamil, whatever way you want to moderate, I leave that to you, please. Thank you, Farooq. So, ladies and gentlemen, the floor is now open for questions. If you have any question, please raise your hand. You will be invited to ask the questions. Thank you very much for taking the question. This is Farhan from Labib Asset. My question is that you said that the minimum
tax has increased for your terminal business? Someone from Al Habib Asset Management Yes. has raised their hand. Please Yeah, go ahead. Shabir, we can hear him. Yeah. We Yeah. can hear. Please continue. Yeah, my question is that you said that the minimum tax has increased for two of your businesses. One is the terminal business and one is connectivity. So can you please repeat how much tax has increased on a turnover basis, and what is the effective tax rate for the two businesses that you've mentioned? Okay. So let me first explain minimum tax. How does it work? For those who are not fully aware of that, the minimum tax works that you compute the normal tax at 29% plus 10% super tax, that is 39%. And on the other hand, you apply the top line taxation on the respective service. For example, LNG की जो top line थी, LNG business की, that was taxed at 9% of the top line. अब वो इस बजट में वो 9 को 15 कर दिया उस सर्विस कैटेगरी को. So from 9, the jump is pretty big, so it goes to 15% of the top line. When it goes there, the comparison between the regular profit के ऊपर जो tax होता है, the minimum tax is whichever is higher. You compare both of them, and whichever is higher FBR वो आपको final tax कर देता है, वो charge कर लेता है. So because 15% of top line of this business is much more than 39% taxation which एक जो normal company को देना पड़ता है, जैसे manufacturing company को देना पड़ता है, therefore it is forced to charge or pay or finally submit the returns on the basis of 15% of top line. The LNG business की बात कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से उसका effective tax rate है वो almost 75 से 80% हो गया, depending on the profitability, because profitability vary कर सकती है year to year, but अगर आप ballpark number पूछें तो पहले वो 50% के जुमरे में होता था effective tax rate, अब वो तकरीबन 75-78 के रेट पे आ गया almost, which is very very high. This is for the terminal business you're telling about. Only one terminal business, जिसको हम LNG business कहते हैं, जो Vopak terminal है वो normal tax regime में fall करता है because of certain exemptions in the income tax law. सिर्फ LNG terminal की बात कर रहा हूँ मैं, from 9 to 15%. And what is the effective tax rate on connectivity business? अच्छा, कनेक्टिविटी बिजनेस का रेट पहले बात करते हैं. द कनेक्टिविटी बिजनेस का रेट 4% ऑफ टॉप लाइन था, जिसको बढ़ा के इस बार 6% कर दिया गया. Again, the 6% of top line beats the 39% of its profitability. और आज अगर आप मुझसे इफेक्टिव टैक्स रेट पूछें तो it touches close to 60% roughly. Again, जैसे मैंने कहा, ये 60 हमेशा नहीं होगा. अगर profitability improve होती है आहिस्ता आहिस्ता तो 60 से नीचे जाना शुरू होगा, but still will remain above 39% unless the regime is changed. तो आज अगर आप मुझसे पूछते हैं तो this is close to 60%. बिकॉज अभी बिजनेस हमने कैसे बहुत पुराना बिजनेस नहीं है, बट इन द कमिंग डेज इट विल कम डाउन बिलो 60 when we improve the revenue and the profitability of this business. And how confident are you that this increase in tax rate would be reduced for both of your businesses? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि it will be reversed in the next budget या in the mini budget or whatever, I don't know. लेकिन one thing is very clear that we have made all the relevant ministries and FBR realize कि जो services tax का जो theme होता है, और ये आपके ताउन से भी, आपके इस फोरम से भी मैं इसलिए उसको reiterate कर रहा हूँ कि जो minimum tax regime होता है वो informal sector के लिए होता है. The professional services, जिसको हम briefcase services कहते हैं, whether it's lawyers, whether it's accountants, whether it's doctors, जो formal sector की तरह return file नहीं करते हैं, उनका minimum tax होता है कि जो tax कट गया सो कट गया, and you make that full and final. For a company like telco, जो tower company या LNG company, they are as good as a plant, as good as an industrial service. So हमारा जो plea FBR के साथ है वो यही है कि why do you not consider this as a normal tax regime? And why do you force them into the minimum tax regime, which is so unfair? Who can survive which business can survive at 80% or 75% tax rate? That's simply not possible. Even 60 is very high. So हमें उम्मीद है कि इस बात को properly consider किया जा रहा है, और we will continue to push this. ये कहना कि कितनी assurance है कि ये reverse हो जाएगा, this is going to be a little bit of a permutation होगा, मैं उस पर guess नहीं करना चाहूँगा, बट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी बेहतर है जिस तरह का मैं रिस्पांस मिला एफबीआर से.
ठीक है. अच्छा, in the quarterly result that you've posted in the detailed financial statements, there was when we compare it to half year, there was no increase in profitability for the terminal business. मतलब जितना half year में था उतना ही जो है 9 months में आया है. Is it because of the taxation के वो जो retrospectively लग गया है for the 6 months, उसकी taxation की वजह से इस दफा इस क्वार्टर में मतलब तकरीबन जीरो जो है प्रॉफिटेबिलिटी है टर्मिनल You're right, बिजनेस. you're right. देखिए कुछ हद तक आपकी बात सही है, कुछ टैक्स का इम्पैक्ट है, बट जैसे मैंने कहा, it eats up a lot of profitability. The tax is eating up a lot of profitability. That's one. इसके अलावा कुछ बिजनेस की साइक्लिकल इम्पैक्ट भी होता है. एलएनजी बिजनेस की कुछ वेसल्स की जो तादाद होती है वो क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा वेरी करती है, तो मे बी दैट इम्पैक्ट इज ऑल्सो देयर. और हमने कुछ प्रोविजनिंग भी ली है. हमारा एक क्लेम था किसी वेंडर का, उसकी प्रोविजनिंग भी ली है एलएनजी बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से ओवरऑल इस बिजनेस ने कोई कैश या प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं की है. तो कुछ वन टाइम एलिमेंट है इसके अंदर, और कुछ जो है वो जैसे मैंने बताया टैक्स का एक रिकरिंग एलिमेंट है. ठीक है. One last question. In the report, you've said that you want to monetize EPQL. So can you explain what do you mean by that? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ईपीक्यूएल देखें, ईपीक्यूएल जैसा मैंने कहा थर्मल बिजनेसेस की डील तो नहीं हुई. जो 3 बिजनेस हम सेल कर रहे थे, ईपीक्यूएल उन 3 बिजनेस में से एक है, जिसके लिए हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर इफ देयर इज अ वे, वी आर करंटली 69% ओनर ऑफ दैट. सो जस्ट लाइक अ गुड पोर्टफोलियो कंपनी, वी कीप आवरसेल्व्स एजाइल. हम देखते हैं कि मार्केट में क्या इसके लिए कोई मोनेटाइजेशन का ऑप्शंस मौजूद हैं या नहीं. If we find a good buyer for the entire part or partial part, why not? So that continue. लेकिन थर के केस में, यानी EPTL के केस में, which is a much bigger business, and the mining business के लिए, we are not looking for a sale right now at all. But EPQL के लिए चूंकि हम देख रहे हैं, तो we thought it's good to share with the users that we're looking for a buyer. ठीक है. बस एक अगर आप गाइडेंस देना चाहें इस चीज पे, लाइक यू सेड दैट पॉलीमर में जो ड्रैग बन रहा है आपका जो है पावर सेगमेंट बन रहा है, सो व्हाई डोंट यू गो फॉर अ कैप्टिव पावर प्लांट? अगर उसमें कोई जो है मसले हैं टू सेट अप पावर प्लांट, तो उस पर भी कोई गाइडेंस दे दें हम. देखिए जो पॉलीमर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक एनर्जी सॉल्यूशंस उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है, केपीआई है राइट नाउ, बिकॉज वी ऑल नो कि कैप्टिव पावर के ऊपर काफी लेवी लग चुकी है, एंड इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव नाउ टू द ट्यून ऑफ 4000 पर MMBTU. इसके लिए हम वेरियस सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रिन्यूएबल्स एंड ग्रिड एंड गैस सब कुछ है. एंड मुझे उम्मीद है कि इन द नेक्स्ट 100 days or so we will be in some position to at least lock that solution, और उसके ऊपर काम शुरू करेंगे. जाहिर है उसको लगने में 1 आध साल लगेगा, लेकिन we are very very close to finding the right mix which is more anti-fragile for future. किसी एक फ्यूल पे हम डिपेंड नहीं करना चाहते कंप्लीटली, ना कोई 30 साल का हम पीपीए करना चाहते हैं किसी के साथ, बिकॉज अगेन आज आप किसी एक फ्यूल के ऊपर जाते हैं और उस पर कोई टैक्स लग जाता है, कार्बन टैक्स या लेवी लग जाती है, देन द होल बिजनेस केस इज डिफिकल्ट टू सेल. सो हम सोच रहे हैं कि द बेस्ट वे इज टू हैव अ मिक्स ऑफ रिन्यूएबल्स प्लस ग्रिड प्लस गैस एक्सेट्रा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. यू आर वेलकम. जी. Next. अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब एंड टीम. सर मेरा एक ही क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू फर्टिलाइजर वर्टिकल. देयर इज अ प्रपोजल जो सुनने में आ रहा है कि तमाम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को जो है हमारी नेटवर्क पे शिफ्ट करने की बात हो रही है, और ये प्रपोजल आई थिंक शायद पहले भी आया था और फिर 2-3 साल तक रहा इसके ऊपर डिस्कशन, बट इसका कोई खातिर ख्वाह इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई. तो अभी इसके ऊपर क्या अपडेट है? ये प्रपोजल है भी कंसिडरेशन में गवर्नमेंट के एंड के ऊपर, या ये सिर्फ जो 2-3 प्लांट इस वक्त आउटसाइड हमारी नेटवर्क है जिसमें FFBL है, दाऊद हरकुलिस का प्लांट है, या ये सिर्फ इन प्लांट्स के लिए बात चल रही है कि उनको एक डेडिकेटेड हमारी सी सप्लाईज दे दी जाए? इस पे थोड़ा अगर आप कुछ गाइड कर सकें. थैंक यू. नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल है. देखें इसका आई एम श्योर ये फर्टिलाइजर के एनालिस्ट ब्रीफिंग में भी सवाल डेफिनेटली आया था, और द आंसर इज यस, देयर इज a very serious consideration going on
जो कि फर्टिलाइजर प्लेयर्स के लिए एक पर्टिकुलर गैस की डेडिकेटेड फील्ड की एलोकेशन के लिए काम हो रहा है ऑन एट द मिनिस्ट्री लेवल। और वो अभी ये तो नहीं कहूँगा कंक्लूड हो गया है, बट वो काफ़ी अच्छे स्टेज पे है। एंड उसका पर्पस यही है कि टू सिक्योर द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री वी वांट ऑल द रेलेवेंट जो आपके प्लांट्स हैं वो चलते रहें एंड सबको एक कंसिस्टेंटली गैस मिलती रहे। ये लॉन्ग टर्म का इनिशिएटिव है, ये कोई एक आध साल का इनिशिएटिव नहीं है, दिस इज अ मोर लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव। और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट भी करनी है फर्टिलाइजर प्लेयर्स को, जैसे आपको पता है प्रेशर एनहांसमेंट फैसिलिटी के ऊपर $300 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं जस्ट टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ द गैस फ्रॉम माड़ी। वो भी सब हम यानी तीनों प्लेयर्स मिलके कर रहे हैं, फौजी, फातिमा एंड एंग्रो, अपने अपने मार्केट शेयर की प्रोपोर्शन में। सो इट इज जस्ट वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि फर्टिलाइजर कंपनीज को कंसिस्टेंटली गैस मिलती रहे, फूड सिक्योरिटी पे कोई बड़ा क्वेश्चन मार्क ना आए फ्यूचर में। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, इसके ऊपर अभी भी बातचीत चल रही है। एंड एज यू नो थोड़ा वक्त लगता है इन चीज़ों में, बट हम उम्मीद करते हैं कि इट विल बी अ गुड एमिकेबल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्लेयर्स। ठीक है। तो सर प्राइसिंग के एंड के ऊपर कुछ इस पे बात हुई है कि लाइक यूनिफॉर्म प्राइसेस हो सकेंगे इसके बाद अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है जब भी फ्यूचर में जाके? देखिए ये प्रपोजल, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये प्रपोजल ज्यादातर एलोकेशन को एड्रेस कर रहा है, प्राइसिंग को एड्रेस नहीं कर रहा। प्राइसिंग के ऊपर भी जाहिर है कोई जाहिर एलोकेशन एंड प्राइसिंग एट टाइम्स गो टुगेदर, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्राइसिंग कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं है इस प्रपोजल का। इट इज मोर टू सिक्योर द गैस। और फिर जब गैस की सिक्योर जो एलोकेशन हो जाती है, देन इसके बाद प्राइसिंग की बारी आती है कि व्हाट इज द राइट प्राइस फॉर किस किस को किस पे मिलेगी गैस, या किस किस पे मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए डिप्लीटिंग फील्ड्स होती हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं हो सकती। डिप्लीटिंग फील्ड के बाद जब आप नई गैस पे आते हैं तो वो पेट्रोलियम पॉलिसी पे सबको शिफ्ट होना पड़ेगा ग्रेजुअली, ये आप भी समझते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ यूरिया बिजनेस। सो pricing is a byproduct, not the front end center of this proposal. Oh, understood, sir. Thank you very much. Thank you. G, who wants to go next? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you for your detailed presentation. I have some questions regarding the telecom sector. First of all, Engro acquired around 10,500 towers from PMCL at a cost of around USD 565 million. However, we see that PTCL is acquiring the entire Telenor Pakistan, including approximately their 13,000 towers for only USD 400 million. And that transaction is also on a cash and debt-free basis. So I'm trying to understand that why such large valuation difference exists in a per tower cost basis. Are your towers superior in some ways? If yes, in what ways? नहीं, सवाल आपका अच्छा है। ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन जब व्हेन वी वर बाइंग दिस पोर्टफोलियो ऑफ जैज, तभी ट्रांजैक्शन सबको पता थी। तो ये सवाल इंटरनली भी बहुत बार आया हमारे बोर्ड पे भी और इन्वेस्टमेंट कमिटीज में भी। पर देखिए ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। एक कंप्लीट टेलको टावर कंपनी एंड टेलीकॉम बिजनेस जैसे टेलीनॉर को लिया तो आपने टावर्स उसके साथ हासिल किए। टावर बिकम्स योर मिल्कियत एज यूफोन या पीटीसीएल, एंड देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दोस टावर्स। आप उसको कव आउट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो रियल वैल्यू जो होती है वो टावर्स, बिकॉज ये याद रखें कि वो खुद एक टेलको है पीटीसीएल यूफोन की फॉर्म में, और वो टावर्स आने के बाद वो टावर्स कुछ टावर रिडंडेंट भी होंगे क्योंकि एक ही जगह पे दो टावर्स लगे हुए हैं, उनमें से एक की जरूरत है एक की नहीं है। ऐसा पूरे पाकिस्तान में बहुत जगहों पर है। सो दैट्स वन वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन। हमने जो टावर दी ओनली अबाउट द टावर पोर्टफोलियो, नॉट द टेलको। और आप ये बात समझ सकते होंगे कि टावर बिजनेस की जो वैल्यूएशन होती है विच इज एज गुड एज द कॉन्ट्रैक्ट। जितना साउंड कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, जितना बेहतर उसके किराया या उसका पावर का सोल्यूशन या उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके एस्केलेशंस होते हैं, उसकी यूएस डॉलर डिनोमिनेशन में उसकी फी होती है, ये, और जितना उसका रिन्यूअल पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल 12 साल प्लस 12 साल प्लस 12 साल, तो ऑलमोस्ट 25-36 ईयर्स के लिए आप तो जितना साउंड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वैल्यू उसी से चलती है। दिस इज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथोडोलॉजी दैट इज फॉलोड। सो जो टेलीनॉर का बिजनेस है
वो टेलको बिजनेस प्लस टावर्स था, तो जो उनकी वैल्यूएशन होगी वो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के हिसाब से चली होगी. व्हाट वी हैव डन, दिस इज मोर ऑफ अ रेंट सीकिंग बिजनेस. हमने तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वी नो के वो जस्टिफाई करता है हमारी इस इन्वेस्टमेंट को. लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसकी जो रिटर्न्स हैं वो काफी हेल्दी हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद जैज. हेंस इसको एग्जैक्टली एप्पल टू एप्पल करना, कंपेयर करना मुनासिब नहीं है. Okay, thank you. I understand. And my second question is that we are seeing that Pakistan's telecom sector is evolving, and you have acquired PMCL's towers and upcoming merger of Yofone and Telenor, and also next year we expect 5G auction. So, what is your overall outlook on Pakistan's telecom sector? देखिए, सर्टेनली ये तो खैर अपने मुंह से कहने वाली बात ही नहीं है, लेकिन वी बिलीव कि ये 5G भी बिल्कुल ऑन द कार्ड्स था, अभी भी है. इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल टावर्स, जिसको हम ट्रैफिक सिग्नल टाइप टावर्स कहते हैं, इट विल ओनली हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग आवर पोर्टफोलियो. जाहिर इट विल नीड इन्वेस्टमेंट, इट विल नीड सम पेशेंस, क्योंकि एक दिन में सारी चीजें नहीं हो जाती. ऑब्वियसली वी हैव मेड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. अभी हम उन टावर्स को थोड़ा इंप्रूव करें जो हमने लिए हैं, उसको कॉस्ट एफिशिएंट बनाएं, उसके पावर सोल्यूशन पे काम करें, उसकी टेंडेंसीज को बेहतर बनाएं. देयर आर सम लो हैंगिंग फ्रूट्स इन दोस टावर्स. यार एक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर जब 10,500 टावर्स को ऑपरेट कर रहा था फॉर 10 years, तो यू कैन इमेजिन उनके लिए ये बैक ऑफिस बिजनेस था. फॉर अस दिस इज फ्रंट एंड सेंटर. ये हमारा कोर बिजनेस है टू रन द टावर्स एफिशिएंटली. एंड जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो रनिंग द 15,000 टावर्स पोर्टफोलियो, you can bring a lot of synergies in them. So चाहे वो मैनेजमेंट साइड की सिनर्जीज हो, चाहे वो सिक्योरिटी साइड की हो, चाहे वो मेंटेनेंस की हो या फ्यूल की हो, so you have a lot of efficiencies that you can bring on these towers. 5G एक रोल आउट होगा, जाहिर है उसका स्पेक्ट्रम बिकेगा, उसके बाद इसका रोल आउट होगा. इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, जैसे 4G में हुआ था. इट टुक फ्यू इयर्स, और हमें भी लगता है कि 5G इट विल टेक अ फ्यू इयर्स. But certainly it is something to look forward to as an opportunity rather than as a risk. Okay, thank you so much. Tasneem Asad, you can go ahead, please. Hello, Assalamu alaikum. Welcome. My question is basically regarding the finance cost which you have acquired, raised from 56.6 billion. Can you elaborate it in the terms of long-term and short-term instruments, and also comment on the WACC structure? देखिए, जो फाइनेंस कॉस्ट हमारी है वो प्राइमरीली आपको जो भी नजर आ रही है, हमारे पास ऑलमोस्ट there's a mix of in the group. अगर मैं थोड़ा सा एक व्यू दे देता हूँ, I'll take 30-40 seconds to explain that. ग्रुप के अंदर बोरिंग लॉन्ग टर्म में कुछ बिजनेसेस में स्पेशली है, जैसे मैंने बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के अंदर सारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है. हम जानबूझ के उस बिजनेस को 60-40 के रेशो पे रखते हैं, बिकॉज जो इसका वैक है वो काफी सूटेबल है. ऑल वी हैव टू डू इज टू मेक श्योर दैट द बिजनेस कंटिन्यूज टू जनरेट कैश. देवदार हमने 60-40 या 62-38 के रेशो पे तकरीबन हम इस बिजनेस को देखते हैं. अगेन मोर देन 60% गेयरिंग होगी इसके अंदर भी. फर्टिलाइजर के अंदर ऑलमोस्ट 50-55% गेयरिंग पे हम तकरीबन बैठे हुए हैं. पॉलीमर में भी तकरीबन यही रेशो है. रफली एज अ ग्रुप वी आर एट 52-53%, क्योंकि कुछ बिजनेसेस में डेट है ही नहीं. सो एज अ ग्रुप वी आर ऑलमोस्ट 52-53% ऑन अ गेयरिंग साइड. और उसका मेन रीजन यही है कि हमने जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे प्रेशर एनहांसमेंट फैसिलिटी जो एंग्रोफर्ट की है 30 अरब रुपए की, वो डेट बेस्ड है. इसी तरह देवदार के अंदर हमने 100 बिलियन का कर्जा कमिट किया है, तो वो ग्रेजुअली इसका ड्रॉ डाउन हो रहा है. सो ऑल इन ऑल जो हमारी फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग टर्म को ही वो कर रही है. हमारे जो प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं. पावर का कर्जा हम उसको वो दैट्स अ गवर्नमेंट गारंटी डेट, सो वी डोंट कंसिडर दैट एज आवर डेट. बट उसको भी अगर इंक्लूड कर लें तो हम 51% के ऊपर एज अ ग्रुप एंड डेट इक्विटी एट सितंबर 2025. सो ये बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी के तहत हम बोरो कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म में जहां पे प्रेशर आता है वो है एंग्रो फर्टिलाइजर के इन्वेंट्रीज. जो एंग्रो फर्टिलाइजर की इन्वेंट्रीज थोड़ी बिल्डअप हुई हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग मार्केट ऑफ यूरिया, उसकी वजह से उनको बोरो करना पड़ रहा है शॉर्ट टर्म में.
बट जैसे मैंने कहा दिसंबर एंड तक आफ्टर द रबी सीजन इंशाल्लाह you will see कि एंग्रो फर्टिलाइजर की भी शॉर्ट टर्म बोरिंग काफी नीचे चली जाएंगी when we will be able to sell most of the stocks या काफी बड़ा पोर्शन स्टॉक का बिक जाएगा. So all in all it is more long term project driven जैसे देवदार है, ऑनफ्राशेयर है और कुछ हद तक फर्टिलाइजर में है लॉन्ग टर्म बोरिंग और पावर सेक्टर की है जो ईपीटीएल के अंदर है चाइनीज लोन हमारा जो है. एंड शॉर्ट टर्म का ज्यादा प्रेशर जो है हमारे ऊपर वो सिर्फ एंग्रो फर्टिलाइजर पे है जो कि genuinely short term है. In about next 90 to 100 days you will see that easing up. Thank you so much. Anyone else, please? Shemi, do you have any questions online that you want me to answer? Farooq, we have been addressing all the questions which were given on the chat. So, Okay. if there are any further questions from the attendees, please go ahead. I think Awais, आपने शायद hand raise किया है. Awais, please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. सब ये अगर आप बता पाएं कि आपने जिक्र भी किया था कि टावर्स में देवदार का जो एग्रीमेंट है इसमें मतलब फॉरेन एक्सचेंज का भी है मतलब डॉलर एप्रिसिएशन और दूसरा जो इन्फ्लेशन है वो भी. तो क्या आप बता पाएंगे कुछ फिक्स पोर्शन भी है कि साल में कितना इंक्रीज होगा फिक्स भी इन चीजों के अलावा? देखिए without going into be very specific on terms of contract, ज़ाहिर है हमारी कुछ limitations है जैसे मैंने लास्ट में बताया था in terms of disclosing everything. But आप मोटा मोटा ये समझ लें कि एक a very healthy part of this revenue that we get from Jazz is dollarized. So to the tune of say half कर लेते हैं आसान करने के लिए 50% dollarized है 50% रुपी है. ठीक है. The rent of the tower which is tower as well as the energy solution. In terms of जो हमें जो पास थ्रू जो अलाउड है जो कि अनफॉर्शेयर के केस में नहीं था which is a plus in this contract जिसके इन्फ्लेशन के जो भी एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के सीपीआई जो है वो पास थ्रू होगी एंड वी फील वेरी सिक्योर्ड कि अगर जैसे 2 साल पहले हुआ था मुल्क में इन्फ्लेशन 25% 28% हो गई थी इन दैट केस वी फील वेरी सेफ एंड सिक्योर कि यार वो पास थ्रू होगी. और जो डॉलर पोर्शन है जाए वो डॉलराइज इन्फ्लेशन जो यूएस इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं उसके थ्रू मूव करेगा. सो हर कंपोनेंट का जो एस्केलेशन है वो उसकी नौयत के हिसाब से है एंड देयरफॉर वी बिलीव दैट वो बिजनेस काफी हेज्ड है बिकॉज इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट डॉलर डिवैल्यूएशन ये सब एक साथ चल रहे होते हैं. यू नो ये हमने 2023 में देखा भी है कि इट ऑल गोज टुगेदर. जब यूएस डॉलर डिवैल्यू होता है इन्फ्लेशन बढ़ती है इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं. इट्स अ विशियस साइकिल एंड हमने इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को कुछ हद तक कहते हैं ना हेज करने की कोशिश की है कि व्हेनेवर देयर इज एनी सच सिनेरियो सो वी डोंट यू नो जैसे अनफॉर्चुनेट में वी हैव लर्न द हार्ड वे जब इंटरेस्ट रेट 22% पे चला गया था तो यू नो उसकी एस्केलेशन फिक्स थी वेरिएबल नहीं थी. अगर वो वेरिएबल होती तो अनफॉर्चुनेट कभी भी उस वक्त लॉसेस में नहीं जाता जो हमारे पुराना टावर बिजनेस है जो फर्स्ट टावर बिजनेस है. बट एज आई सेड लास्ट टाइम हमने कुछ गलतियां की उनसे लर्न किया और उसको कॉन्ट्रैक्ट में बिल्ड किया है फॉर देवदार. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. जी तलहा यू हैव अ क्वेश्चन. Talha, can you ask the question, please? I see your hand raised. Maybe there's some technical glitch. So if there are any further, let me ask one more time. Anybody has a question before we thank everyone and come to the close of the call? Talha, I think there's some issue from the technical side. Problem. We can talk to him offline. Offline. Yes, Talha, maybe you can post your question in the chat and we'll get back to you on that.
ठीक है. So before we sign off, I just want to request, देखिए इस बार हमारे फाइनेंशियल स्टेट में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, थर्मल एसिड्स की वजह से भी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एंग्रो होल्डिंग की वजह से भी, जो दाऊद हर्कुलिस वाला था, और देवदार की एक्विजिशन जो हमने की है, जिसकी वजह से काफी सारे अकाउंटिंग इम्पैक्ट्स भी हैं और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स भी हैं. For those who want to understand some of these better, feel free to contact us offline. शमीर से बात कर लें, हम मेरे ऑफिस से रब्ता कर लें. We will try and address your questions so that you are fully aware के what impacts these things are bringing to the financial statements, including taxation का अगर कोई आपको सवाल मजीद clarify करना हो on the LNG business etc. ठीक है. Thank you so much, Ji. I guess there are no further questions, so we'll take your leave. Thank you so much for the time, and Allah Hafiz. Thank you so much, everyone.